Hello dear friends, you are welcome back to Bodulwar Academy. In the last video, exercise 4.3 class 10 and NCERT, we have discussed the question 1, okay, in which क्या क्वेश्चन था कि if the given quadratic equation is exist, find out the roots but by completing the square. Now see in the question 2 what they are asking. They are asking also find the roots of the quadratic equations given in equation 1 above by applying the quadratic formula. Here in this question 2 you have to use direct quadratic formula. What is quadratic formula? X equals to minus b plus minus and root of b square minus 4ac by 2a. Okay, you have to use this quadratic formula. Okay, और क्वेश्चन नंबर में चार क्वेश्चन थे शायद से. ओके, तो देखिए पहले हमको चेक करना है इज इट एग्जिस्ट और नॉट. ओके, हाउ टू चेक डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac इफ ग्रेटर देन 0. रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल. If equals to 0, real but equal, not less than 0, does not exist. Solution does not exist in a real. Okay, real roots does not exist. Now see, step by step we will discuss all the problems. Now see the problem number first. What is 2x square? Oh, minus of 7x plus 3. Now we have to check first of all, is this exist or not? Then for that we want to check the discriminant, that is b square minus 4ac. But first of all we want the values of abc. Then how to find the abcs? Compare this given quadratic equation with the standard, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Now by comparing with this standard form of a quadratic equation you will get the values of a, b, c. How many? A is 2, b is how many? minus 7, c is how many? 3. Okay, now check the discriminant, that is b square minus 4ac. Okay, अब देखिए how many b? minus 7. Minus 7 whole square minus of 4 times a is how many? 2. C is how many? 3. Okay, no problem. Minus 7 whole square minus 49. No, plus 49. Very good. Minus 4 into 2 8. 8 into 3 24. 49 minus 24 25, and 25 is greater than 0. That's why roots will be real but unequal. रूट्स भाई पता चल गया है भाई, रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल. ओ ठीक है भाई, रूट्स का नेचर हमें पता चल गया है कि रूट्स रहने वाले, रूट्स रियल रहने वाले हैं और कैसे रहने वाले? अनइक्वल. ओके, अब देखिए रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड यूज करनी है? डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला. व्हाट इज x equals to minus b plus minus and root of b square minus of 4ac upon 2 times a. Therefore x equals to minus of what is b? minus 7. Okay, minus 7 plus minus under root of what is the value of b square minus 4ac? We have already find the discriminant, that is the 25, which is greater than 0. No need to worry, write it down here. Now see 2 into what is a? Is how many? 2. Okay, now see, just a rearrangement and simple algebra and get your answer. Minus minus become plus, plus minus under root of 25 5, under root of 25 5 divided by 2 into 2 4. Now just a separate plus and minus and get your values. Now see, x equals to 7 plus 5 divided by 4 and x equals to 7 minus 5 divided by 4. अब देखिए 7 plus 5 12, 12 by 4. Okay, 7 minus 5 2, this is 2 by 4. Just a rearrangement. Okay, और 12 को 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3. This is the first root of a given quadratic equation. Now see the second, x equals to, ओके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 1/. दिस इज द सेकंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. भाई कितना इजी सवाल था. क्या करना था? उन्होंने कहा था कि आपको रूट्स तो फाइंड आउट करना है
और डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन रूट्स फाइंड आउट करने से हमारा फर्ज बनता है कि हमको चेक करना चाहिए वही डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं बराबर। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया फिर, ओके। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमको एबीसी की वैल्यूज चाहिए, तो हमने फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया और एबीसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया, कितना आया 25, विच इज ग्रेटर देन 0। देन द रूट्स विल बी रियल बट अनइक्वल, ये तो हमको पता चला। चलो उसका फ्यूचर, रूट्स का फ्यूचर हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता ही चल गया कि रूट्स से आने वाले बट अनइक्वल रहने वाले। फिर हमको क्या कहा कि डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया। फिर क्या, सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एबीसी एंड सिंपल अलजेब्रा, नथिंग मोर, ओके। ये था हमारा पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नाउ सी द सेकंड वन, बॉयज आर यू स्लीपिंग? नाउ सी द सेकंड एग्जांपल। They have given a quadratic equation 2x square plus x minus 4. First of all, we have to check the discriminant, okay, in which we will find is it okay or not, okay, कि हम आगे एक रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या नहीं। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना यानी कि एबीसी की वैल्यूज हमको चाहिए। तो हाउ टू फाइंड द एबीसीज? So we have to compare this given quadratic equation with the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Just comparing with the standard form of quadratic equation, get the values of a. A is how many? 2. B is how many? 1. C is how many? -4. Okay, we got the values of ABC. Now, what is the formula for discriminant? B square minus 4ac. Okay, B square minus of 4ac. Okay, what is B? B is 1. Okay, 1 ka square minus 4 times. What is A? 2. 2. And C is how many? -4. Okay, C is how many? -4. Now see, 1 square is nothing but 1 minus. But this minus becomes plus. 4 into 2, 8. 8 into 4, 32. Therefore, 1 plus 32, 33. That's why b square minus 4ac is greater than 0. Then, if the b square minus 4ac comes greater than 0, then the roots will be obviously real but unequal. Obviously roots will be real but unequal. ठीक है, भविष्य पता चल गया है कि जो आने वाले रूट्स है वो तो रियल तो रहेंगे लेकिन अनइक्वल भी रहेंगे। वाह वाह क्या बात है। तो ठीक है, अब ये जो हमको रूट्स फाइंड आउट करना है उसके लिए कौन सी मेथड यूज करनी है भाई? दिया है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? सर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 से अपन 2a। वेरी गुड बेटा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b square minus 4ac by 2 times a. Okay, therefore x equals to minus of how many b? B is only 1. Okay, just 1 plus minus b square minus 4ac already हमने find out किया, वो है 33. Okay, 33. 2 times. How many a? A is nothing but 2. Now just a simple calculation and simple algebra. Dumri calculation. Plus minus 33. 2 into 2, 4. Just separate plus and minus and get your answer. X equals to -1 as it is. Now I am taking plus root 33 by 4. And the second x equals to -1 as it is. Plus हो गया, अब क्या रहेगा? Minus of root 33 divided by 4. These are the roots for a given quadratic equation which are real but unequal, because here is plus under root of 33 and here is minus under root of 33. That's it. क्या था भाई? कुछ नहीं करना था आपको, just we have check the discriminant. Okay, to know the future of the आने वाले रूट्स क्या था? रियल है लेकिन अनइक्वल रहे। तो जस्ट हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया हमने, फिर तो डायरेक्ट ही है। Okay, are you ready? Ready for the third problem? Now focus on the problem number 3 from the question 2.
Now see, we have to find the solution for this given quadratic equation. First of all, we have to check the discriminant. For that, you need to find the values of a, b, c. If you compare with the standard quadratic equation, that is ax square bx plus c equals to 0. Now comparing with the standard, I get the values of a equals to 4, b equals to 4 root 3 and c equals to 3. Okay. Now see, I want to know what is the discriminant for this b square minus 4ac. Let's see. B is how many? 4 root 3 उसका स्क्वायर, ये होगा b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हाउ मेनी a 4 एंड c इज हाउ मेनी 3. ठीक है, अब देखिए, अभी इसको देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर. तो देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑलवेज गेट कैंसल बाई एनिमी है वो. अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16. अब रूट स्क्वायर रूट और 2 कैंसल तो क्या बच गया 3. 16 इंटू 3 48, ये हो गया 48. अब देखिए 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 अगेन 48 एंड 48 comes as 0. That's why discriminant कितना है हमारा 0. That's why the roots will be क्या रहेंगे, रियल तो रहेंगे बट इक्वल. ओके, अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो रियल तो भी रहते लेकिन अनइक्वल रहते. लेकिन अब कितना है हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0. दैट्स व्हाई द आने वाले रूट्स विल बी रियल बट इक्वल. नाउ सी which method we have to use. That is the direct formula x equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2 times a for x equals to minus of b is how many 4 times root 3, 4 times root 3 plus minus. अब देखिए under root of b square minus 4ac कितना आया 0. 2 times a is how many 4. Okay, just a simple algebra. Minus 4 times root 3, root of 0 0, root of 0 0, 2 into 4 8. Now just see x equals to minus 4 root 3 plus 0 by 8 and x equals to minus 4 root 3 minus 0 by 8. Therefore x equals to minus 4 into root 3 plus 0 again minus 4 root 3 by 8 and x equals to minus 4 root 3 minus 0 again minus 4 root 3 by 8. देखिए भाई रूट्स कैसे है इक्वल. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस रूट 3. अब देखिए यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यानी कि माइनस रूट ऑफ 3 by 2 and again x equals to minus root of 3 by 2. These are the roots for the given quadratic equation, that is 4x square plus 4 root 3 into x plus 3 equals to 0. Roots तो भाई रियल है लेकिन कैसे है इक्वल है. माइनस रूट 3 by 2. ओके, सेम रूट्स में. अब देखिए जस्ट लास्ट प्रॉब्लम रहेगा उसको भी देख लेंगे. तो देखिए नाउ the last problem from the question 2 x square plus x plus 4 equals to 0. Now if I compare with the standard quadratic equation, I get the values of a equals to 2, b equals to 1 and c equals to 4. Now I want to check now discriminant for the existence of a real root. Now see b square minus of 4ac equals to b is how many 1, 1 का स्क्वायर minus 4 times a is how many 2 and c is 4, 2 and c is 4. This is 1 minus 32. Oh, minus 31. That's why b square minus 4ac less than 0. Then the roots will be no more real roots. क्या रहेंगे no more real roots. That is therefore
रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जस्ट हो गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए पेपर में अगर आपको पूछा तो बस यही तो आपका आंसर रहने वाला है। अब देखिए ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं है लेकिन इमेजिनरी रूट तो एग्जिस्ट है ना, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में देखा था। तो इसको भी देख लेंगे, इसको भी काय को छोड़ेंगे। ओके, अगर आपको देखिए आपको अगर पेपर में पूछा तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, जस्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, अगर लेस देन 0 आया तो लिखने का नो मोर रियल रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है लेकिन इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट है। ये आपको इस सेक्शन में क्लास 12 में, सॉरी क्लास 10 में है नहीं तो आगे वाली क्लास में होगा ये आपको। अब देखिए ठीक है, ओके, अब देखिए हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से इमेजिनरी रूट से x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स ए, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी कितना है हमारे पास ओनली 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है हमारे पास माइनस 31 2 टाइम्स ए कितना है हमारे पास 2, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखिए -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 30, ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे था माइनस ऑफ 31, आई कैन राइट -31 -1 इंटू 31 -1 इंटू 31। अब ये हो गया, यहाँ पे रूट ए इंटू रूट बी का फार्मूला लगाना है, रूट ऑफ ए इंटू बी। अब देखिए रूट ऑफ ए इंटू बी, ये हो गया -1 ए और 31 हो गया बी। अब रूट ऑफ ए इंटू बी को मैं रूट ए इंटू रूट बी लिख सकता है, यानी कि रूट ऑफ -1 रूट ऑफ 31। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस, अब रूट ऑफ -1 कितना हो जाएगा आई, कितना हो जाएगा ये है, रूट ऑफ -1 ये है आई। ओके, इसका प्रूफ हम आगे जाके सीखने वाले। ये हो गया रूट ऑफ 31 बाय 4, जस्ट अब सेपरेट कीजिए -1 प्लस आई 31 बाय 4 एंड x इक्वल्स टू -1 माइनस आई 31 बाय 4। तो देखिए रूट्स आए, रूट्स इमेजिनरी थे और अनइक्वल है। रूट्स आर इमेजिनरी क्योंकि यहाँ पर आई प्रेजेंट है, और अनइक्वल है क्योंकि यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे माइनस है। ओके, जस्ट ये आपको आगे का है, इसको आप कर भी आपने किया भी नहीं, आप उसके बारे में सोचा भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतना पता रहना चाहिए। ओके, कि हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, वो आया नेगेटिव, दैट इज द लेस देन 0, दैट्स व्हाई देयर विल बी द नो मोर रियल रूट्स एंड द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।